हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय न्यू प्रोजेक्ट कार दैट इज़ अ 90 सीरीज टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो। तो दोस्तों, आई वाज लुकिंग फॉर गुड टोयोटा सर्फ और प्राडो फॉर पास्ट फ्यू इयर्स, बट अब ये गाड़ी इतनी पुरानी हो चुकी भी है कि इसमें अच्छी कंडीशन की गाड़ी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। और आई हैव हैड अ कपल ऑफ देम इन द पास्ट, और बैक इन द एरा जब ये नई इंपोर्ट होकर आती थी जापान से, और उस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ आपको मिल जाती थी और ऑलमोस्ट लेस देन हाफ ऑफ द प्राइस व्हाट पीपल आर आस्किंग फॉर इट टुडे। तो ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस तो टोयोटा सर्फ की थी, बट आई वाज नॉट एबल टू फाइंड अ गुड वन। या एमनेस्टी स्कीम की थी, पेट्रोल इंजन वाली, एंड माय प्रेफरेंस वाज ओनली द डीजल वेरिएंट ऑफ Prado or Surf. Personally, I like it. So, and I have always had very good experience with them. So, luckily, I found this Toyota Prado 1998 model, and this is the TZ variant. Or one of my friend owned it for past 8 or 9 years, and it is a good vehicle, well looked after and well maintained. So my friend was selling it and I got it. So it needs some maintenance work on the body and on the mechanical side as well. नथिंग सीरियस, बट जैसा कि इसके बॉनेट का कलर अगर आप गौर करेंगे तो फेड हुआ हुआ है एंड लैकर इज पीलिंग ऑफ, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड. सो इट नीड्स रिफ्रेशिंग प्रोफेशनल रीपेंट जॉब ऑन द बॉनेट. एंड एक इसका लेफ्ट साइड का फेंडर जो है वो पेंट हुआ हुआ है एंड इट हैज़ सम imperfections as well, so that also needs a professional repaint job. So I'll get it done, and there is some mechanical work on the vehicle. It needs some servicing, and there are some oil leaks from the engine, and it definitely needs proper tune-up, क्योंकि इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पिकअप बहुत अच्छी नहीं है, एंड इट इज़ स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 100 किलोमीटर की स्पीड. एंड देर इज़ नथिंग लाइक स्पार्क प्लग और उस टाइप की कोई ट्यूनिंग नहीं होती, बट देर आर सम अदर थिंग्स दैट कुड बी डन ऑन द डीजल engine and can be serviced to make it perform better. So we will get the job done on it and I'll keep you posted. So otherwise इस गाड़ी का इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा है, and back in time I have really enjoyed the ownership of these 90 series Prado, and these are one of the best vehicles of all times, and very durable, reliable and robust SUV. And I think it stands the test of time even today. Not very efficient like the newer SUVs or newer version of the Prado, but still it is a very rugged and a very capable off-roading machine. And so दोस्तों, I will start working on this vehicle and I will keep you updated through the videos about the repair work that I have done on this vehicle, some possible upgrades that I could do to the exterior to make it look better, and on the mechanical side to make it drive better and feel better. And whatever I will do, I'll keep you updated. So stay tuned